Okay. So, as always, we'll do a mix of Hindi and English. If you have any question, then okay, go ahead. Is it a good question? स्वामी जी, अगर साधक में आत्मविश्वास की कमी हो और साधना का पद पहले भी बहुत बड़ा है, तो इस केस में क्या किया जा सकता है? और अगर विष्णु सहस्त्रनाम में बहुत सारा रेपिटेशन है, तो उससे क्या उसकी प्यूरिफिकेशन पोटेंसी कम होती है? Okay. आपका प्रश्न है कि यदि साधक में आत्मविश्वास की कमी हो और साधना का मार्ग बहुत लंबा है, बहुत एक पता नहीं किस मोड़ पर मनुष्य पहुंचेगा, तो उसके चलते क्या करना चाहिए साधक को। और विष्णु सहस्रनाम या किसी भी सहस्रनाम या जप में जब हम बहुत बार उसकी पुनरुक्ति करते हैं, तो क्या उससे साधना क्षीण होती है या कम प्रभाव मिलता है या कम फल मिलता है? You've had your chance, so that's it. Thank you. I know what you mean. Yes. विष्णु सहस्रनाम में कुछ नाम रिपीट होते हैं, 2 नाम ललिता सहस्रनाम में रिपीट होते हैं, परंतु जो ओरिजिनल विष्णु सहस्रनाम है जिसका कि हमने उच्चारण किया था जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान की, उसमें कोई सहस्रनाम रिपीट नहीं होता, उसमें कोई नाम रिपीट नहीं होता, दोबारा से नहीं आता। एक आपने सुना होगा, ओम रमे रमे ओम रमे रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये अक्सर सहस्रनाम के संदर्भ में इसको कहा जाता है कि सहस्रनाम जो है, जो राम नाम है, एक सहस्रनाम के बराबर है। परंतु जब भीष्म पितामह ने सहस्रनाम जो सुनाया उस समय अर्जुन को, उसमें यह श्लोक कहीं नहीं आता। आपने कभी इस बात पर गौर किया है? क्योंकि जो ओरिजिनल सहस्रनाम है वो कोई और है, जिसमें कि भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाया और उनका हे वरानने सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने, कि हे वरानने, उसमें ये आता है। अब इनका कहना है कि कुछ नाम उसमें दोबारा आते हैं और उसी का हम उत्तर दे रहे थे। But you jumped the gun and totally broke my flow of thought. एक मां होती है, जैसे उनको हम नाम से थोड़े ना बुलाते हैं। कई बार प्यार से मैं अपनी माता रानी को नाम से बुला देता हूं ऐसे, पर हम मां को मां ही बोलते हैं। मां के कितने ही नाम क्यों ना हो, हम एक ही नाम से तो पुकारते हैं, मां ही तो बोलते हैं। तो यदि नाम दोबारा आ भी गया तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, नाम तो भगवान का ही है। आप एक अच्छी चीज ही कर रहे हैं। दलाई लामा से पूछा गया कि आप इतना ध्यान करते हैं और ध्यान योग में इतना स्थित हैं और सारी जिंदगी आपने मेडिटेशन में बिताई है, तो अगर कोई हुआ ही ना ऐसा कि मृत्यु के बाद कोई और लोक है या एक दूसरा जन्म है, पुनर्जन्म है, ऐसा ना हुआ तो फिर आपको कैसा लगेगा? दलाई लामा ने कहा कि देखिए, इसमें तो कोई ज्यादा दुविधा वाली बात है नहीं, क्योंकि मान लीजिए पुनर्जन्म है तो भैया अपनी तो लग पड़ी, उन्होंने मेरी तो निकल पड़ी, क्योंकि मैं तो वैसे ही किया जैसे शास्त्रों में लिखा है, माय पुनर्जन्म इज सॉर्टेड। और अगर मान लीजिए नहीं है तो कुछ अच्छी चीज ही की, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, कोई गाली नहीं दी, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को धोखा नहीं दिया, बैठकर ईश्वर नाम का चिंतन ही तो किया। अगर भाव बनता हो साधना में तो श्रेयस्कर होता है, अगर ना भी बनता हो तो भी ना करने से साधना करना अति श्रेयस्कर है। एक बालक ने अपने दादा से यही प्रश्न किया कि उसके दादा उसको प्रतिदिन मस्जिद लेकर जाते थे इबादत के लिए, कि हम रोज एक ही चीज बार बार बोले जा रहे हैं, क्या इसका कोई लाभ है? तो दादा ने कहा कि एक काम करो बेटा, पास में जो नदी बह रही है ना, उसमें से थोड़ा पानी भर के ले आओ और ये लो, इस पात्र में ले आओ। वो छलनी थी। तो छोटे बच्चे ने सोचा कि
दादाजी शायद उम्र से पहले घूम गए हैं थोड़ा, पर दादा ने कहा नहीं, लाओ, जो मैं कह रहा हूं उसको करो। वो पास में एक अंगीठी होती है, उसके पास थोड़ा राख होती है, उसमें से छलनी उठा के जो है पकड़ा देते हैं। वो बच्चा जाता है, पानी लाता है, जब तक लाता है कहता दादाजी इसमें कहां से पानी रुकेगा ना, थोड़ा सा भी नहीं रुका, मैं किसी दूसरे बर्तन में ले आता हूं इसको। नहीं, एक बार फिर से जाओ। तो दादा उसको जैसे तैसे समझा के 4-5 बार प्रलोभन देकर अलग अलग बातों का उनको छलनी से पानी लेने के लिए भेज देते हैं उस बच्चे को। 5-7 बार जब वो जाता है तो बच्चा जो है बगावत कर देता है कि अब मुझे नहीं पानी भरना, क्योंकि इसमें पानी भर ही नहीं सकते। तुमने ठीक कहा बेटा, जरा छलनी की ओर देखो तो बालक क्या देखता है, वो धुल चुकी है, उस पर जो राख जमी हुई थी, जो कोयले का कालखपन था, वो सारी जो है दूर हो चुकी है। ठीक वैसा ही नाम जप से होता है, ठीक वैसा ही साधना से होता है। धीरे धीरे मनुष्य के चित्त का शुद्धिकरण होता रहता है। आपने कहा यदि साधक में आत्मविश्वास ना हो तो क्या करे? आत्मविश्वास के लिए ही तो साधना कर रहे हैं। साधना करने से आत्मविश्वास बनेगा, आत्मविश्वास बनने से साधना और दृढ़ होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की साधना क्यों ना हो, मंत्र जप की हो, योग की हो, पढ़ाई की हो, कुछ जीवन में प्राप्त करने की हो, किसी भी चीज की साधना करना। शनशना उपरमेद बुद्धि धृति गृह्यता आत्मसंस्तमन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। एक ही मार्ग है कौनतय, यदि मनुष्य किसी चीज की प्राप्ति करना चाहता है, यदि वो ध्यान को सिद्ध करना चाहता है, शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनमात्मना, एकाग्रता से दृढ़ होकर एक जगह अपना आसन लगा ले। शनय शनय उपरमेद बुद्धि धृति गृह्यता, शनय शनय धीरे धीरे एक एक कदम करके चलता रहे, बुद्धि को धारण करना सीखे, इंद्रियों को संकुचित करना सीखे, जिसको कि पतंजलि ने कहा प्रत्याहार के माध्यम से आप कर सकते हो। इंद्रियों को कम से कम भोजन दो तो अपने आप क्षीण पड़नी शुरू हो जाएंगी। मन को आत्मसंस्तमन कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत, मन तो भागेगा, मन की एक ही गति है दौड़ना, मन स्थिर हो ही नहीं सकता। मन को स्थिर करना है तो चेतना को स्थिर करना होता है, विचारों को स्थिर करना होता है। अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्यञ्च गृह्यते, थोड़ा अभ्यास चाहिए, थोड़ा वैराग्य चाहिए। जब तक कुछ आपको प्रिय है विश्व में बाहर, जब तक किसी चीज की भी इच्छा है, तब तक जो है मन मनुष्य का स्थिर नहीं हो सकता। और स्थिर ना भी हो इसमें कोई बड़ी दुख की बात नहीं है, पर एक जगह लग जाए, एक ही दिशा में दौड़ रहा है मन, तो कहीं ना कहीं अवश्य पहुंचेगा। समस्या तब आती है जब मन 20 दिशाओं में दौड़ रहा है। आशा पाश तैरबद्धा काम क्रोध प्रायण, शत शत आशाओं के पाश में मनुष्य बना हुआ है। क्या यही मनुष्य जीवन का सारांश है कि आज इस आशा की पूर्ति कर रहे हैं, कल उस आशा की पूर्ति करेंगे, उसी में मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है। तो शायद आपने 13 मंथ्स इन द हिमालयस पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो उसी में शायद हमने बिल्कुल शुरू में लिखा है, नागा बाबा ने एक हमसे चीज बोली थी कि अंधेरे में भी बेटा तीर मारते रहोगे, पत्थर मारते रहोगे, तो कभी ना कभी तो निशाने पर लगेगा। मान लीजिए एक स्तंभ है वहां पर अंधेरे में, और आपने बहुत सारे कंकर पत्थर एकत्रित किए हुए हैं और आप मारे जा रहे हो, कभी ना कभी तो एक आवाज आएगी, ठंग के लगा है स्तंभ पर वो पत्थर जो है लग गया है। हिम्मत हार के तो प्राप्ति नहीं हो सकती किसी भी चीज की, कार्य को छोड़ के तो प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए यदि छोटे छोटे लक्ष्यों को मनुष्य धारण करता है तो उसकी आत्मा को बल मिलता है। फिर आप यदि बोलो मैं सारा जीवन कुछ नहीं करूंगा, मान लीजिए कोई संकल्प लेते हो, मैं सारा जीवन सुबह 3 बजे उठूंगा, और 2 ही दिन बाद आप 5 बजे उठ रहे हो, तो आपका आत्मविश्वास जो है लगभग खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं, मुझसे ये नहीं होगा।
मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए संकल्प हमेशा वो धारण करना चाहिए जो जिसको पर आप पूरा उतर सको। आप बोलो मैं केवल 5 दिन 3 बजे उठूंगा, छठे दिन या तो फिर आप एक ब्रेक ले लीजिए, या छठे दिन बोलिए अब 5 दिन और मैं 3 बजे उठूंगा। जब ऐसा 40-50 दिन कर लेंगे तो वृत्ति बननी शुरू हो जाएगी। जब 90 दिन कर लेंगे तो एक मन स्वतः ही उस तरफ लगना शुरू हो जाएगा। जो मुझे जानते हैं, आपको सब पता है कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हफ्ते में 5 दिन मैं जरूर एक्सरसाइज करूं। 6:15 बजे मैं अपने जिम में होता हूं सुबह। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत शौक है लोहा उठाने का वहां जाकर, परंतु अब एक आदत डाल ली है, चाहे आप 2 बजे सो, चाहे 3 बजे सो, 6:15 बजे जिम में होने चाहिए। बाद में देखेंगे। वो विश्राम जो नहीं हुआ, दिन में कभी हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, रात्रि में हो जाएगा, नहीं भी होगा। तो वो जो एकाग्रता है, वो जो नियम है, उसी से मनुष्य को फ्रीडम मिलती है, उसी से स्वतंत्रता मिलती है, उसी से आत्मविश्वास आता है। इसलिए पतंजलि ने सबसे यम के बाद नियम को रख दिया। पहले सिद्धांतों को धारण कर लो, उसके पश्चात जिंदगी को, जीवन को एक नियम से जियो, तो अपने आप जो है आत्मविश्वास बन जाएगा। समटाइम्स यू मस्ट फील दैट something is lacking in life, and it's a feeling that sometimes is very persistent in everybody's life. Oh, something is lacking. I have everything, but something is lacking, something is missing. I feel a void, or I feel this emptiness, and I don't know how to fill it. Believe it or not, it's the very nature of consciousness. The very nature of consciousness is to feel what's lacking. And sometimes you also have to differentiate between whether something is existentially absent from your life or merely lacking. I think in that book, Being and Nothingness by Jean-Paul Sartre, he writes this beautiful thing. He says, I walk into a cafe, and in that cafe, I am expecting my friend Pierre to show up. So constantly my consciousness is finding places where Pierre could be sitting. It's thinking Pierre could be sitting in this seat, this chair. But when I walked into the cafe, I realized Pierre is not sitting there. Which is very different from abstract absence. That is, I'm sitting in a cafe, and I'm thinking, Pierre should have been here. Or I'm missing Pierre, my friend Pierre. Now similarly, is happiness or self-esteem or self-confidence or a sense of purpose missing in your life? Or are you missing it? There's a difference between the two. And your consciousness on its own is the only thing that ever assigns any meaning to anything at all. And to quote an unoriginal example, which is not my own, I read this in a book. I don't recall the name of the author, but I think it was something on existentialism. If you see a cup that's broken, all the fragments of the cup are still there. But it's a cup no more. Much like when the soul departs the body, the same body is lying there. But we say, so-and-so person is dead. Well, all your life you dealt with that body is still there. You clearly were not doing telepathy. We're not dealing with that person's mind, we're dealing with that person's body. And when we are saying, oh, this person is now dead, which means clearly something has left. The consciousness is no longer there. The flux of consciousness is no longer there. So when that happens, the cup, the fragments are still there, but the cup is no more there. And the consciousness had an idea of it, that this used to be a cup at some point in time.
So the very nature of human consciousness is to intend something. It's intentional. You eat food, you cook a meal because the meal is lacking being cooked. You finish your meal because you're lacking eating it. You rest up because your body lacks energy. You wake up because you are lacking some things that you wish to see fulfilled during the course of your day. So when you feel that I am lacking something, that's not good enough a reason to leave everything that you're doing and embark on a journey where you think this will lead me to a sense of purpose. Because if you're not happy in this moment, you won't be happy in any other moment. Your whole life, human beings, our whole life is constantly spent between what's no longer there and what's not there yet. And in between, the magic is happening. The very present moment. But you have to understand, the consciousness of an individual does not understand the present moment. Because when you intend to make something happen, when you're going after something, when you want something, you're always thinking about the future. But we forget that what is your future past? That there is two things, right? There is past future and future past. What is your future past was once your past future. In the sense that I suddenly feel like I'm complicating things. But what was your past? Before that moment occurred, that was your future. But now it's past. And what is your future? One day it's going to be past as well. Vartamane vartatopi so yogit mayuchyate. And in between is the present, O Arjuna. The one who understands that I have to really take control of this moment. Because it's not going to come again. I don't have to listen to the ramblings of a mind all the time. It's just designed to find gaps, even when none exist. It creates those gaps. That this moment is mine, I better take control of my mind. If I can control my mind, I can control my circumstances. Because if I can control my mind, I will make the right decisions. I will make decisions that lead me further onto the road of happiness. As opposed to decisions where I am wishing for one thing but doing the exact opposite. That is the root cause of human suffering. Not that you want something to happen in your life. Not that we wish, I wish I had this. That is okay. I mean, that's mind's nature to be progressive. But that my actions are not aligned with what I really want. In fact, they are the exact opposite of what I should want. I think Abraham Lincoln said, discipline is choosing what you want later over what you want now. That's really self-discipline in a nutshell. There is something you want later towards which you are working, and that there is something that's propelling you to experience some pleasure, some joy now, and you say, let me just do this now and forget about the later. And there is no success in indiscipline, any way, shape or form. So when your actions don't align with what you are aiming for, then we shouldn't be surprised, we shouldn't be astonished if we are met with resistance, if we face failure.
I quoted this example a long time back. There was a seminar on wealth creation. And the speaker had given everybody notepads. And he said to everybody, write down, what would you do if you won $1 million? What would you do if you suddenly had a windfall of $1 million? And everybody started writing. Somebody said, oh, I'm going to go on a world tour. Always wanted to travel the world. That's what I'm going to do, to help with everything else. And somebody said, oh, I'm just going to buy that one McLaren, whatever car, and that was my dream car, I'm going to buy that. Somebody said, oh, I'm just going to pay off my mortgage and buy a bigger home. And so on and so forth. Then he collected everybody's responses and he chuckled and he said, do you see the dichotomy here? All of you are here, he said, to create wealth. And the first opportunity I offer you to have some wealth, what you are writing is how you will spend it. So in your mind, you're not at all thinking about creating wealth. All you're thinking about it, how I'll enjoy my wealth. And the two are vastly different. Yes, you've got to look at the fruits to stay motivated, but ultimately it's the journey. And if you don't care about it enough, you will not have the motivation to see it through. And it doesn't matter what your path is, what your destination is, what your goal is. If you really don't care about the journey itself, if you're not passionate about what you're doing, we can never see it through. It's impossible. Because results may take months, may take years, may take decades before they stand manifest before you. But to then find yourself the motivation day in, day out, day in, day out, day in, day out, day in, day out to do what you've got to do, that is only possible if you care, if you're passionate, if you deeply care about the journey itself and not just the outcome. Maybe I can take another question. So, somebody who's never asked before. Okay, go ahead. So the question